या लैपटॉप लेना हो तो सबसे बड़ा दर्द सर वो लंबी चौड़ी स्पेक शीट होती है। मतलब एमबी, जीबी, आरपीएम, ये सब सुनकर अक्सर सर चकरा जाता है ना। खैर, हमारे आज के इस तफसीली जायजे का मकसद इन मुश्किल टेक्निकल बातों को बिल्कुल आसान और सीधी सादी जबान में समझना है। एक बार ये बातें समझ आ गईं तो स्टोरेज ड्राइव्स के हवाले से बेहतरीन फैसला करना बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सीधा काम की बात पर आते हैं और इस पूरी स्पेक शीट को 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, स्टोरेज की बुनियादी बातें। दूसरा, रफ्तार और कारकर्दगी। तीसरा, साइज और कनेक्शंस। चौथा, भरोसामंदी और माहौल। और आखिर में स्टोरेज की जगह को बेहतर बनाने के तरीके। तो हिस्सा पहला, ड्राइव स्टोरेज की बुनियादी बातें। गुंजाइश यानी कैपेसिटी को समझना। किसी भी ड्राइव को ना एक डिजिटल तिजोरी या लॉकर समझ लें। कैपेसिटी या गुंजाइश दरअसल वो जगह है जहां सारा डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल्स महफूज रहती हैं। इसे आमतौर पर गीगाबाइट्स यानी जीबी और टेराबाइट्स यानी टीबी में मापा जाता है। नंबर जितना बड़ा होगा, तिजोरी उतनी ही वसी होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी बड़े कमरे में ज़्यादा सामान रखने की सहूलत मिल जाए। अब आज की दुनिया को ही देख लें, जहां हाई डेफिनेशन वीडियोस, हेवी 3D मॉडल्स और बड़ी बड़ी गेम्स इतनी आम हो चुकी हैं। वहां 1 टेराबाइट या इससे ज़्यादा की गुंजाइश सच पूछें तो महज कोई ऑप्शन नहीं रही, बल्कि एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। इससे कम का मतलब है कि लॉकर बहुत जल्द भर जाएगा और फिर बार बार पुरानी फाइल्स डिलीट करने की झंझट। इसीलिए कम से कम 1 टेराबाइट को एक स्टैंडर्ड या बेंचमार्क मानकर चलना चाहिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रफ्तार और कारकर्दगी की पैमाइश। रफ्तार की ज़रूरत। ज़रा इस पुरानी टेक्नोलॉजी का तसव्वुर तो करें। महज एक छोटी सी फाइल खोलने के लिए ड्राइव के अंदर एक बाकायदा मैकेनिकल हेड फिजिकली एक घूमती हुई डिस्क पर हरकत करके सही जगह तलाश करता है, बिल्कुल किसी पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की तरह। इस पूरे अमल को सीक टाइम कहा जाता है और इसे मिली सेकेंड्स में मापते हैं। ये तरीका है तो बहुत दिलचस्प, लेकिन सच ये है कि आज के दौर में ये ड्राइव की तेज़ रफ्तार के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। और बस यही वजह है कि पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव्स यानी एचडीडी और जदीद सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एचडीडी में बड़ी गुंजाइश तो मिल जाती है, लेकिन पुर्जों की हरकत की वजह से ये ज़रा सुस्त होती है। इसके बरक्स एसएसडी में फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है, मतलब कोई हरकत करने वाला पुर्जा नहीं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि डेटा तक रसाई लगभग फौरी होती है और रफ्तार कई गुना तेज़। तो अहम बात यह है कि क्या हो अगर दोनों के फ़वाइद एक साथ चाहिए हों। तो यहाँ एंट्री होती है SSHD यानी सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव की। ये दरअसल एक कमाल का दरमियानी रास्ता है। इसमें HDD की बड़ी गुंजाइश और SSD की तेज़ रफ्तार दोनों का एक ज़बरदस्त तवाज़ुन मिल जाता है, जो कीमत, गुंजाइश और कारकर्दगी को बिल्कुल बेहतरीन सतह पर रखता है। अच्छा, तेज़ रफ्तार का एक और बहुत बड़ा राज है जिसे कैशे कहते हैं। ये ड्राइव के अंदर बिल्कुल एक VIP सेक्शन की तरह काम करता है। ये वो तेज़ तरीन आर्जी स्टोरेज है जो बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को बिल्कुल अगली सफ़ में रखती है, ताकि उसे ढूंढने में ज़रा भी वक्त ज़ाया ना हो। ये छोटा सा फीचर ड्राइव की मजमूई रफ्तार को एक ज़बरदस्त बूस्ट दे देता है। अंदरूनी मैकेनिक्स और रफ्तार के राज तो चले समझ आ गए, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्राइव्स आखिर फिजिकल तौर पर कंप्यूटर्स में फिट कैसे होती हैं और ये बाकी पूरे सिस्टम के साथ बातचीत कैसे करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा हिस्सा, जिस्मानी साइज और कनेक्शंस, बनावट और फेल। टेक्निकल ज़बान में फिजिकल साइज को फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। आमतौर पर बड़ी 3.5 इंच की ड्राइव्स डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए बनाई जाती हैं, जबकि 2.5 इंच की छोटी ड्राइव्स लैपटॉप्स में फिट की जाती हैं। और अगर आजकल की जदीद तरीन SSDs की बात करें तो वो M.2 और PCIe जैसे इंतहाई स्मार्ट साइजेस में आती हैं, जो दरअसल एक छोटी सी चिप की तरह बराह रास्त मदरबोर्ड पर लग जाती हैं। अब देखते हैं कि ये ड्राइव्स हार्डवेयर से जुड़ती कैसे हैं। इस काम के लिए इंटरफेस स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं। अंदरूनी ड्राइव्स अमूमन SATA या फिर इंतहाई तेज़ PCIe के ज़रिए कनेक्ट होती हैं, जबकि एक्सटर्नल या पोर्टेबल ड्राइव्स के लिए USB या फिर बिजली की सी तेज़ी वाले थंडरबोल्ट कनेक्शंस मिलते हैं, जो मिनटों का काम सेकंडों में कर डालते हैं। अब चलते हैं चौथे हिस्से की जानिब, भरोसामंदी और माहौल, जिंदगी का दौरानिया और सारिफ का तजुर्बा।
किसी भी ड्राइव की भरोसामंदी को जांचने के लिए इन दो टेक्निकल अल्फाज को समझना बहुत ज़रूरी है। HDDs के लिए MTBF देखा जाता है, यानी ड्राइव के ख़राब होने से पहले का औसत वक्त, जबकि SSDs के लिए TBW यानी टेराबाइट्स रिटर्न का इस्तेमाल होता है, जो बताता है कि इसकी ज़िंदगी में इस पर कितना डेटा बार बार लिखा जा सकता है। स्पीक शीट पर ये नंबर्स जितने बड़े होंगे, ड्राइव उतनी ही काबिल भरोसा होगी। तवील उम्री के अलावा दो और चीज़ें भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल पर गहरा असर डालती हैं। पहला, बिजली का इस्तेमाल, जिसे वॉट्स में मापा जाता है, और दूसरा शोर की सतह, जिसे डेसिबल्स में देखते हैं। कम वॉट्स वाली ड्राइव लैपटॉप की बैटरी को जल्दी ख़त्म होने से बचाती है, और शोर की बात की जाए तो फ्लैश पर मबनी SSDs बिल्कुल खामोशी से काम करती हैं, जबकि मैकेनिकल HDDs में से वही डिस्क घूमने और खट-खट की पुरानी आवाज़ें मुसलसल आती रहती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, स्टोरेज की जगह को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, सॉफ्टवेयर के हल। नया हार्डवेयर खरीदने पर पैसे उड़ाने से पहले मौजूदा जगह को बचाने का एक बेहतरीन और बिल्कुल मुफ्त तरीका फाइल कंप्रेशन है। इसका तरीका बहुत ही सादा है। बड़े फोल्डर्स को मुंतखब करें और उन्हें जिप फाइल में कंप्रेस कर दें। इससे होता यह है कि फाइल का साइज नुमाया तौर पर कम हो जाता है, जिससे डेटा ट्रांसफ़र करना और ईमेल के जरिए शेयर करना इंतहाई आसान हो जाता है। बस एक बात जहन में रखनी है कि इन फाइल्स को इस्तेमाल करने से पहले दोबारा एक्सट्रैक्ट ज़रूर करना पड़ता है। और ये टेबल हमारी इस तमाम गुफ्तगू का निचोड़ बहुत ही शानदार तरीके से पेश कर रहा है। एक साफ सुथरी चेकलिस्ट, गुंजाइश से लेकर रफ्तार तक, फॉर्म फैक्टर्स से कैशे तक और भरोसामंदी से लेकर शोर के लेवल तक, सब कुछ यहाँ मौजूद है। अब अगली बार जब भी कोई टेक्निकल स्पेक सामने आएगी तो उलझन के बजाय ये चेकलिस्ट एक बेहतरीन ड्राइव मुंतखब करने के लिए मुकम्मल और वाज़ेह रहनुमाई देगी। तो आखिर में ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, डिजिटल फाइल्स का साइज़ रोज़ बरोज़ बड़ा होता जा रहा है और ट्रांसफ़र की रफ्तार भी पलक झपकने जितनी तेज़ हो चुकी है। ऐसे तेज़ी से बदलते हुए माहौल में आज की ये सबसे कटिंग एज और जदीद ड्राइव्स कल की पुरानी टेक्नोलॉजी बनने में आखिर कितना वक्त लेंगी? डिजिटल दुनिया को चलाने वाले ये पोशीदा इंजन शायद हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रहे हैं। We generate a massive amount of data. 4K video files, huge software suites, massive video games. Eventually, every user hits a wall. We simply run out of storage space. Buying a new drive to solve this problem usually leads to immediate frustration. The specification sheet often looks like a wall of acronyms: RPM, TBW, M.2, PCIe NVMe. Pick the wrong one and it might physically fail to fit inside your computer. Even if it fits, the wrong drive can drain a laptop battery or create a bottleneck that makes opening a simple file take agonizing seconds. A storage drive is the vault for your digital life. To make an informed choice, we need to understand how these technical specifications translate from physical dimensions to digital efficiency. First is form factor. Desktops take 3.5-inch drives, laptops use 2.5-inch or tiny M.2 strips. Next is interface. Older SATA provides a narrow data lane. Newer PCIe or Thunderbolt act as a multi-lane freeway, moving massive data simultaneously. Once the physical connections are sorted, we look at the two most common metrics: capacity and speed. Capacity is the total space you have, measured in gigabytes or terabytes. Speed dictates how quickly your computer can read or write data to that space. For high capacity at a lower price, manufacturers use hard disk drives. They rely on spinning magnetic disks and a moving arm to locate data. Their speed is limited by these mechanics, usually measured in revolutions per minute, or RPM. Solid-state drives, or SSDs, remove the moving parts entirely. They store files on flash memory chips. Because there is no waiting for a physical disk to spin up, data transfer rates jump from hundreds of megabytes to several gigabytes per second. A bridge technology also exists, the solid-state hybrid drive, or SSHD. This pairs a large mechanical storage disk with a small block of flash memory to balance total storage cost with everyday loading speeds. This foundational choice between mechanical platters and flash memory defines the baseline speed and the physical limits of how your data is handled. Mechanical drives wait for a physical head to navigate tracks. This is seek time. SSDs instantly access coordinates on a flash grid.
Drives also use cache, an ultra-fast memory block routing data straight to the processor for immediate performance boosts. Software can also multiply efficiency through file compression, tools that mathematically shrink files down, like creating a zip folder, simultaneously save physical capacity and reduce the time required to push that file across the connection interface. Drive mechanics also shape your device's physical environment. Spinning heavy mechanical disks can drain laptop batteries and produce a constant clicking noise. SSDs operate in silence and draw very little power. For durability, mechanical drive lifespan uses MTBF, mean time between failures, calculating how long parts spin before breaking. SSD longevity uses TBW, terabytes written. High TBW means silicon cells can handle massive data cycling before degrading. These metrics illustrate the practical trade-offs between mechanical endurance, pure data speed, and energy efficiency. A storage drive is a highly engineered ecosystem balancing physical space, connection bandwidth, storage capacity, and structural longevity. Let's look at that alphabet soup from earlier. A 2 terabyte M.2 PCIe SSD with high TBW. We can now see exactly what this represents. It offers massive high capacity, fits in a tiny slot, utilizes a multi-lane data freeway, runs on silent flash memory, and delivers heavy daily endurance. By understanding this vocabulary of hardware specifications, you eliminate all the guesswork. You gain the ability to choose the exact technology tailored to your digital workflow, your device, and your budget. Actually have a total grip on computer storage. If you've ever felt completely overwhelmed while shopping for a hard drive, or just totally confused by the alphabet soup of tech jargon out there, you are definitely in the right place. Today, we're demystifying storage drives. We're going to use a really clear step-by-step process based directly on the Chapter 7 Drive Architecture quiz created by Yashab Sarfraz. By the time we're done here, you're going to be able to look at any drive and know exactly what it does, how it connects, and just how fast it really is. Okay, so let's dive right into this 5-step process. We're going to cover Step 1, the storage basics, Step 2, forms and interfaces, Step 3, choosing drive types, Step 4, measuring drive speed, and finally, Step 5, advanced data optimization. All right, Step 1, the storage basics. So, before we even think about obsessing over speeds or motherboards, we've got to understand the fundamental purpose of the hardware itself, right? I mean, you can't measure speed if you don't even know what's running the race. So, use this 4-part checklist in your mind. First, check the capacity. Second, identify the form. Third, choose the tech. And fourth, evaluate the speed. Keep that simple framework in the back of your mind as we go. Now, before we go any further, just a quick foundational question for you. What is the actual main function of a storage drive? Take a second. Is it printing documents? Playing sound? Obviously not, right? Right. The answer is just to store digital data. That's its ultimate job, the whole shebang. Everything else is totally secondary. And when we talk about how much data it can hold, we're talking about its capacity, which we generally measure in gigabytes, GB, and terabytes, TB. To put that into perspective, let's look at 1 terabyte, or 1 TB. If you're comparing your standard capacities like 128, 256, or 500 gigabytes, that 1 TB option is the absolute biggest of the bunch. It's massive. We're talking enough space for hundreds of thousands of photos or just hours and hours of video. Moving right along to Step 2, forms and interfaces. So this step is all about the physical traits and how things actually connect so our machines can talk to each other. Which brings us to a phrase you're going to hear constantly, form factor. Sounds super technical, doesn't it? Kind of like something out of a sci-fi movie. But it's actually incredibly simple. Form factor literally just means the drive's physical size and shape. That is it. But the catch here is that this size totally dictates what device the drive can actually fit inside. You could have endless capacity, but if the form factor is wrong, yeah, you're out of luck. For instance, if you're rocking a desktop and buying a hard disk drive, the standard form factor is 3.5 inch. But for laptops, it's a tighter squeeze, so the common form factor is a smaller 2.5 inch drive. Definitely keep this in mind. You really don't want to accidentally buy a bulky 3.5 inch drive and try to jam it into a super slim laptop. It's just not going to end well. Okay, next up is the interface. That's just the tech term for how the drive physically connects to your computer.
USB is what we normally use for external drives, for that easy plug-and-play convenience. But PCIe, that's the interface used for high-speed internal SSDs. It lets data basically fly at blistering speeds directly to the motherboard. All right, step 3, choosing drive types. This is where we dive inside the casing and look at the actual tech. In one corner, you've got the HDD, or hard disk drive. These guys rely on actual, physical, spinning magnetic disks. And in the other corner, the SSD, or solid-state drive. SSDs use flash memory. Absolutely no moving parts. No spinning disks, no mechanical arms, just perfectly silent, stationary memory. But what if you actually want the best of both worlds? Well, enter the SSHD. This is such a clever middle ground solution. An SSHD is a hybrid drive. It literally combines the massive, budget-friendly capacity of a traditional HDD with that incredibly snappy flash memory speed of an SSD. It's a total game changer if you need tons of space but don't want to sacrifice all your performance. Which brings us to step 4, measuring drive speed. So we've got the capacity, the shape, the interface, the tech. Now it's finally time to talk performance. How fast can this thing actually move your files? There are 2 main speeds you gotta know. Let's say you're typing up a brand new document. When you hit save, you're using write speed. That's how fast the drive saves data. But tomorrow, when you open that file back up, that relies entirely on read speed. Let's translate the jargon here. Your overall data transfer rate is usually measured in megabytes or gigabytes per second, MB by S or GB by S. Simple enough. But if you're dealing with one of those older HDDs with the spinning magnetic disks, you also look at its spinning speed, which is measured in RPM, or revolutions per minute. Now, beyond just the raw transfer rate, there is another absolutely crucial metric, and that's access time. This is exactly how long it takes to find and open your required data. And obviously, a lower access time means a faster drive. So the big takeaway here? It honestly doesn't matter how fast a drive can transfer a file if it takes forever just to find the file on the disk in the first place. And for traditional hard drives, the physical time it takes the mechanical arm to hunt down your data on the disk is called seek time. Because these drives are spinning so incredibly fast, seek time isn't measured in seconds, it's measured in milliseconds. Sure, that sounds like a tiny fraction of time, but trust me, those milliseconds really add up when your computer's trying to open thousands of background files all at once. And finally, step 5, advanced data optimization. Let's peek at a couple of behind-the-scenes tricks these drives use to handle your data more efficiently. First up is the cache. Think of cache like a quick access pocket. It's a small, ultra-fast storage area right there on the drive specifically for your most frequently used data. The second trick is file compression. This is exactly what it sounds like, literally reducing file sizes so they take up way less capacity. And the format you'll usually see for these compressed folders is the good old zip format. Wow, okay, we've covered a ton of ground here based on Yashab Sarfraz's quiz. And speaking of the quiz, let's look at his grading scale. If you were taking the full 25-question Chapter 7 quiz and scored a 20 or higher, boom, you've mastered this. If you got between 15 and 19, maybe brush up just a bit. And if you hypothetically scored under a 15, well, it might be time to review capacity, access time, and those drive types one more time. So I want to leave you with this one thought. Based on this 5-step process we just walked through together, looking at capacity, forms, types, speed, and optimization, what do you think is the weakest link in your current computer storage drive? Is it an old HDD spinning at a really slow RPM? Is your capacity just totally maxed out? Take what we went over today, go check out your own machine, and find out. Thanks so much for hanging out with me for this explainer, and definitely keep learning.